So let us study how to classify soil according to size. Okay, so from here you can see that in size, it's very important to know about size. Maximum size that can be used is 80 mm, yani ki 8 centimeter. Okay, but usually we do not use such big 8 centimeter aggregate size is still big and it might cause problem, right? Like जब हम उस concrete को handle करेंगे, when we want to place it inside a column or a slab, then the size is too big and it might और spaces कम होगा, है ना? या फिर सोचो आपके कॉलम्स के बीच में स्टील रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको भी थोड़ा सा वो तो जगह कम होंगे, तो वो इतना बड़े बड़े एग्रीगेट साइज यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है, मिक्सिंग करने में भी प्रॉब्लम आ सकता है. इसीलिए हम उसको लिमिट करते हैं मैक्सिमम 20 mm साइज़, यानी कि 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज़ हम यूजुअली कंसिडर करते हैं जनरली. ओके, now the thing that you have to understand or learn is this one, key aggregates are divided into 2 categories. Okay, number 1 is according to size, the other one is according to size. Okay, number 1 is coarse aggregate. Coarse aggregate किसको बोलते हैं? The one whose aggregate size is greater than 4.75 mm. Okay, तो जो यानी कि 0.075 सेंटीमीटर से भी बड़ा, तो 0.475 सेंटीमीटर से बड़ा, 4.75 mm से बड़ा को हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट. एंड द एग्रीगेट्स हुज साइज इज स्मॉलर देन 4.75 mm इज नोन एज फाइन एग्रीगेट. ओके, you need to understand, you need to learn these 2 words, coarse and fine aggregate, very well in its size, because you are going to remember, you are going to use these 2 words everywhere throughout your civil engineering course. Okay, now you will understand it more. Classification of soil. Okay, so this is your coarse aggregate and this is your fine aggregate. Let us see. Coarse aggregate में we have boulders, pebbles and gravels. अभी हमने पढ़ा कोर्स एग्रीगेट साइज किसको बोलते हैं? जिसका साइज 4.75 mm से बड़ा है. ठीक है, तो लेट अस सी ग्रेवल. पहले ग्रेवल का साइज कितना है? 4.75 mm से 80 mm, यानी कि 0.475 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर्स को हम बोलते हैं ग्रेवल्स. यू कैन सी इन द पिक्चर. फिर आता है पेबल्स. इसका साइज कितना है? 80 to 300 mm को हम बोलते हैं पेबल्स. देन थर्ड कम्स बोल्डर्स. इसका साइज जो 300 mm से भी बड़ा हो. ठीक है, हुज साइज इज ग्रेटर देन 300 mm, यानी कि 30 सेंटीमीटर. जितना भी उससे बड़ा जितना भी पत्थर जो 300 mm से बड़ा है उसको हम बोल्डर्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू फाइन एग्रीगेट. इन फाइन एग्रीगेट्स वी हैव सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड यू रियली नीड टू नो these terms and their particle size by heart. Okay, so number 1 for sand fraction. उसका साइज कितना है? अब 4.75 mm से कम ही होगा ना फाइन एग्रीगेट, सो इसलिए 4.75 mm से 0.075 mm को हम बोलते हैं सैंड. यानी कि फाइन एग्रीगेट्स में सबसे बड़ा पार्टिकल से किसका है? सैंड का है. इफ़ यू कंपेयर ऑल 3, सैंड, सिल्ट, क्ले, द बिगेस्ट वन इज सैंड. फिर आता है सिल्ट. 0.075 mm to 0.002 mm is silt, और clay is very small, like 0.002 mm से कम, lesser than 0.002 mm. Now let us classify the aggregates according to its shape. Okay, number 1 is rounded shape. Example, rounded aggregates तो आपने देखा ही होगा. मेनली वी सी राउंडेड एग्रीगेट्स नियर रिवर, जो आपका सी सैंड होता है, डेजर्ट सैंड होता है, सी शोर जो सी के पास में जो सैंड्स होता है, देयर एग्रीगेट्स होता है. दीज आर ऑल योर राउंडेड शेप एग्रीगेट्स. ओके, नाउ लेट अस सी राउंडेड एग्रीगेट्स. The aggregates with rounded particles, okay, mainly river or seashore gravels, have minimum voids ranging from 32 to 33%. Now what is voids? Let us take an example of this drawing. Can you see this drawing? Okay, voids is like
सी दिस आर फिल्ड विद एग्रीगेट्स, बट कैन यू सी दिस ब्लैक, ये क्या है, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये बीच में, these are all your gaps, right? Can you see these gaps? Let me show you properly. These gaps, these are all your gaps, right? Here is a big gap, this may be gaps hai, black. So these gaps between the aggregates, they are known as voids. Okay, you need to use the word voids. तो अगर आप total volume of this voids of this कंसिडरिंग द होल वॉल्यूम, मानो ये टोटल जो आपको दिख रहा है इमेज में, ये टोटल वॉल्यूम है, इनमें से अगर आपको ये गैप्स का वॉल्यूम हम निकालेंगे तो राउंडेड में कितना होगा, 32 to 33% होगा आपका गैप का परसेंटेज, यानी कि वॉइड का परसेंटेज. But consider, see this word minimum. Okay, rounded shape have minimum voids, that's 32 to 33. That means अगर आप दूसरे shape of aggregates यानी कि rounded, angular, sub angular, flaky, बहुत सारे aggregates है अलग अलग shape, उनके साथ अगर आप compare करोगे तो सबसे कम voids इसके पास होगा rounded aggregates के पास होंगे. ठीक है, the void percentage will be minimum on rounded aggregates. The only disadvantage is that interlocking between its particle is less, hence the development of bond is poor. Now, if you see, okay, rounded aggregates have smooth texture. वो दिखने में थोड़ा smooth लगेगा, है ना? Because of that, like each rounded part, it cannot form good bond with other particles. Because of its smooth texture, it will be slippery. Okay? अगर वो बहुत स्मूथ है तो वो थोड़ा स्लिपरी होगा ना, वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं, वो एक दूसरे के साथ स्लिप होगा, यानी कि फिसल जाता है, एक दूसरे के साथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ये एग्रीगेट्स के बीच में, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, because of its slipperiness. Okay, there will be no interlocking, and hence if there is no interlocking, अगर एक दूसरे के साथ लॉक नहीं हुआ, then obviously there won't be proper bond. और अगर proper bond नहीं है, then it is not suitable for high strength concrete. So because of its improper bond formation, this cannot be used for high strength concrete. Now let us see angular aggregates. Now this is totally opposite. अभी हमने देखा rounded, तो rounded कैसा था, एकदम round था. Angular कैसे है, it has sharp edges. If you see the images, see इसका angles, it has different angles. The shape, if you see the aggregates have different angles, right? और it has sharp edges, भी बहुत sharp है, तो इसको हम बोलते हैं angular aggregates. Okay, now let us read the angular aggregates with sharp and angular and rough particles. Okay, example crushed rocks, they have angular shape and they are थोड़ा rough particles, has a maximum voids ranging from 38 to 40%. So अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी मैंने समझाया राउंडेड एग्रीगेट्स में जो वॉइड्स था, ये ब्लैक वॉइड्स जो आपको दिख रहा है गैप, ये 33% था, लेकिन अगर आप एंगुलर एग्रीगेट्स में देखेंगे तो इसमें गैप ज़्यादा है. ठीक है, इसका गैप का टोटल वॉइड परसेंटेज 38 to 40%, यानी कि ज़्यादा है. ठीक है, बट एडवांटेज देखो, द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल इज गुड. ओके, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स रफ टेक्सचर. ओके, अगर आप इसको देखोगे एंगुलर एग्रीगेट्स तो इसके पास रफ टेक्सचर है. बिकॉज ऑफ इट्स रफ टेक्सचर ये एक दूसरे के दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा. अगर आप दो पार्टिकल्स को ऐसे जॉइन करोगे तो उसके बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिसके वजह से, ठीक है, it has good interlocking properties, because of which it can form very good bond, and even strength formation is good in angular aggregates. Now let us see the third type, that is flaky aggregates. Flaky aggregates किसको बोलते हैं? An aggregate is termed flaky when its least dimension is less than 3/5 of its mean dimension. Let us forget this definition. मैं आपको ये definition अच्छे से समझाऊंगी जब हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको बस ये जानना है कि flaky aggregates किसको बोलते हैं. ठीक है, let us see, let's read this. जो साइड में मैंने definition दिया है. It has small thickness as compared to length and width. Let me draw. Okay, for example, this is your flaky aggregate. This is your flaky aggregate. ठीक है, इनमें से मुझे बताओ लेंथ कौन सा है? लेंथ इज दिस लॉन्ग पार्ट. विड्थ कौन सा है? ब्रेथ पार्ट. और आपका थिकनेस कौन सा है? ये.
जब थिकनेस आपके व्हेन द थिकनेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू when thickness is very small compared to length and width, then it is called flaky aggregate. अब कंपेयर करो थिकनेस कितना छोटा है, लेंथ कितना लंबा है, विड्थ कितना बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं जब थिकनेस when the thickness is very small compared to length and width, then it's known as flaky aggregates. अब यहाँ पर इमेज में भी देखो, जो बहुत चेप्टा होता है, जो बहुत फ्लैट होता है, एग्रीगेट्स विच आर वेरी फ्लैट, चेप्टे एग्रीगेट्स, उसको हम फ्लेकी एग्रीगेट्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी दिस पॉइंट. The presence of these particles should be restricted to 10 to 15%. Now if you see the shape of this aggregate, it's very flat, which means it does not form proper bond with each other, it does not give proper interlocking in the concrete. ठीक है. Because of which it does not contribute to much strength, because of which we do not want too much of flaky aggregates in our concrete. So its content, its percentage content is limited to maximum 10 to 15%. यानी कि maximum हम 10 to 15% ही अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं देता तो इसका यूज़ नहीं है. नाउ इफ़ यू सी द शेप्स हेयर, ओके, राउंडेड अभी मैंने दिखाया, ये राउंडेड है, ये सब राउंडेड है, मीन्स लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली राउंडेड, इसमें थोड़ा सा एंगुलर भी है, लेकिन यू कैन से इट इज सब राउंडेड. Then you can see here, this is angular, it has sharp edges and angles, right? और एक और है यानी कि सब एंगुलर, यानी कि ये इसमें एजेस भी है पर थोड़ा थोड़ा राउंड भी है, थोड़ा थोड़ा ना, तो वी कैन से इट सब एंगुलर, बट ज़्यादा एंगुलर है इसलिए हम सब एंगुलर. और ये दो अभी मैंने दिखाया, ये है आपका फ्लेकी एग्रीगेट्स. यू कैन सी राइट, इट्स वेरी फ्लैट एंड अदर वन इज elongated aggregates, like the word say elongated, यानी कि long is related to what? Length. यानी कि length जो है, when length is too long, when length is too much long compared to the width and the thickness और width के साथ कंपेयर करते हुए अगर लेंथ बहुत लॉन्ग है एग्रीगेट्स का, तो उसको हम elongated aggregates बोलते हैं. This is the image I have put, you can see from here also, okay, अभी जो मैंने explain किया है. Now let us see how shapes determine the strength, okay. Now let us see from number point 1. From economic point, rounded aggregates are preferred to angular aggregates because less amount of cement is required. This is obvious. How? अभी हमने पढ़ा कि see here, okay, राउंडेड एग्रीगेट्स में कितना वॉइड्स होता है, अराउंड यू कैन से 33% वॉइड, यानी कि मिनिमम वॉइड्स राउंडेड एग्रीगेट्स में होता है. ये गैप का परसेंटेज, राइट. वॉइड्स क्या था, दिस गैप्स, जो गैप बचता है, तो मैक्स मिनिमम 33% होता है राउंडेड. और एंगुलर में कितना होता था ये गैप्स, इफ़ यू सी दिस गैप्स, कैन यू सी दिस गैप्स, ये गैप्स बचा है ना, ऑलमोस्ट 40 या 38 होता है, यू कैन से 38. तो इन दोनों में से वॉइड्स यानी कि गैप किसका कम है, राउंडेड में कम है ना. तो अगर वॉइड्स कम है तो ये सीमेंट पेस्ट भी कम लगेगा ये वॉइड्स को फिल करने के लिए, यानी कि ये गैप जो है ये कौन फिल करते हैं, दिस गैप्स आर फिल्ड बाय सीमेंट पेस्ट ओनली, राइट. इफ देयर इज लेस गैप then less cement paste is required. If less cement paste is required, then we can make it economic structure, right? So in terms of economic, अगर पैसा बचाना है तो people try to use rounded aggregates because it has less voids, hence less cement paste is required. Okay. Second point, let us see. But angular aggregates are superior to rounded aggregates because, okay, but if you want to make good aggregates, like if you want to make high strength concrete, then we prefer angular aggregates. Number one, why? Because they show better interlocking effect in concrete, like I just explained, okay. Angular aggregates have sharp edges, have rough texture, because of which it can form good bond between two different particles of aggregate. It can form good interlocking property, okay, because they have friction, so they can form good bond and good interlocking properties, because of which high bond strength can also be formed. Yani ki if there are good interlocking structure, good interlocking strength, then obviously the structures will remain together with each other, right. वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे, तो bond जो है proper form होगा.
the bond will be better compared to rounded aggregates. The third is additional cement requirement gives higher strength and durability. Like I just said, see, since the void percentage, the gap percentage is more in angular aggregates, then the cement paste required is also more. Because of which अगर आप सीमेंट पेस्ट ज़्यादा लगाओगे तो हाँ एक्सपेंसिव तो है, पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सीमेंट पेस्ट ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा देंगे और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ टेक्सचर. अब टेक्सचर क्या है? टेक्सचर ये है जो वो प्रॉपर्टी है जो आपके एग्रीगेट्स को दिखाता है कि वो शाइनी है क्या, पॉलिश्ड है क्या, मतलब एकदम शाइनी है क्या, दिखने में एकदम डल सा लग रहा है, एकदम मतलब कोई कलर नहीं है उसमें, एकदम डल सा दिखता है, या फिर वो स्मूथ है या फिर रफ़ है. ये आपका क्या है? ये सब प्रॉपर्टी जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं टेक्सचर. ठीक है. तो लेट अस कंपेयर स्मूथ एंड रफ टेक्सचर. स्मूथ टेक्सचर क्या है? एज स्मूथनेस ऑफ सरफेस इंक्रीजेस, contact area decreases, hence have less bonding area with matrix. मतलब see, obviously if the surface of the aggregate is smooth, then I just said then they do not have any friction with each other, right? तो अगर आप एक दूसरे को चिपक के भी रखेंगे तो वो it will be slippery और वो फिसल जाएंगे, यानी कि it will not bond with each other, it will not interlock with each other because the surface is very smooth, so it will be थोड़ा slippery, यानी कि फिसल जाएंगे, because of which it will not form any contact area. And if there is no contact area, then obviously there will not be any bonding area, there will not be any bonding, मतलब less bonding area with matrix also. Matrix in a, what is matrix? Matrix होता है आपका पेस्ट, सीमेंट पेस्ट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. तो इवन सीमेंट पेस्ट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू रफ टेक्सचर. रफ टेक्सचर क्या होता है? रफ टेक्सचर के पास फ्रिक्शन होता है. अगर आप दो रफ पार्टिकल्स कुछ साथ में रखेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के साथ में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक भी करेंगे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ. ओके. Like you can see the difference here also, you can study this. Okay, so we will keep our lecture till here for today. We'll continue the next lecture from next class. Thank you very much, guys.